by those who have not attended the Congress. But I have provided them that booklet, souvenir. From there, they have seen that what are the topics which were discussed over there. There are various articles which are written. And all these things will be explained by our speaker. Of the parts of the souvenir. So I would first urge them to speak upon, and wherever required, I will be supporting them. So who is taking first? Arusi? Good afternoon, everyone. Welcome to today's Saturday class on takeaways from WCOA 2022. I, Arushi Meti, along with my batchmates Ishika Sharma, Ginni Sharma, and Urmi Jhawar, will take you through the section 1, Building Trust of WCOA 2022. The remaining sections will be covered in the following Saturday classes. So let's get rolling. World Congress of Accountants was first held more than 118 years ago. It is the large-scale international event of accountants all over the world. So it was first took place in 1904 at St. Louis, USA, and was last held in Sydney, Australia in 2018. This year, it took place in 2021. In 2022, it was its 21st anniversary, and it took place in India for the first time in South Asia. So it was in collaboration with IFAC, which is founded in 1977. Can anyone please give me the full form of IFAC? And when was it established? So IFAC was established in 1977, and it is a global organization. So at Institute is member of IFAC. Yes, ICI is also the IFAC. So as you can see, Bhupender sir and Vikas Gupta sir talked about the conference in person. So first we would like to ask Bhupender sir about his experience there. See, basically, when I have attended this Congress, you all must have seen that what I have actually done over there on my LinkedIn account. So, have told me, sir, please brief me that what was there in the various sessions which has been taken by the speakers. So I told all of them that actually I have attended very less what were there actually happened over there. That was not the case, in fact. There were so many sessions on the subject like future of accounting, on trust, on sustainability. And apart from that, see, as and when we attend such congress or such conference, there are all opportunities to meet different type of people. So that is one thing which particularly from India, who are into the different practices, which presently we may not be into that practices, and they are actually into the specializations. जैसे सबसे पहले मैं मिला, I recorded their names and numbers also, with their specializations, that what they actually do, so that as and when you cannot actually remember their names, but as and when it is required, I can actually search in the mobile phone that yes, this was the person to whom I met at World Congress of Accountants for this particular matter. So people were there who is into
who are into like debt recovery through IBC process. So their entire work is that how to recover the debt, nothing else within IBC, how to recover the debt. So they focus on that area only. Many of the young practitioners, they were more into the startups, that yes, how to basically cater the needs of the startup right from their incorporation to their funding, as well as many other areas. So different people we have met who are actually into the different practices. And not only that, what we observed is that firms, chartered accountant firms, are now more into their capacity buildings. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, firms are very small. There are only large accounting firms like Big Four, KPMG, EY, Deloitte, and PwC who think of the networking, who thinks of the networking. But now there are firms who are thinking of Indian firms who are thinking of networking as well as expanding themselves globally. So one is your Desai Haribhakti and Company, DHS. They have come out with a network DHS. Similarly, there is a firm KC Mehta and Company. They have come out with a network KCM. And apart from this, there is one more retired partner of Deloitte. He has come out with a network True and Fair Professional Network. So they have come out with this type of network. And idea behind all these exercises is that people have to basically have a larger team size, working into different areas, different subjects. See, now those people who have actually recently attempted, I have communicated to one of them कि अभी क्या इंडस्ट्री में जब हम ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा हमारा पैकेज बेटर होने वाला होता है. But mind it, now when you will be working as a consultant and not into the industry, then you will be paid more if we compare it with the people who works in the industry. लेकिन उसमें आपको थोड़ा अपना स्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, है ना. कुछ डिस्कशन मेरा अभी रिसेंटली हुआ था जिसमें ये बोला गया कि सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, है ना, एंड दे जनरली आर बीइंग हायर्ड बाय दोज हु आर एक्चुअली इनटू द बिजनेस, है ना. तो जिसके पास आइडिया है, जिसके पास रिसोर्सेज है, या जो टेक्निकल साइड से है, या जो आईटी से है, या जो बिजनेस से है, तो ये लोग अपना बिजनेस करने के लिए मतलब दे आर मोर they are more competent. It is being said that they are more competent to do the business. और उसको बिजनेस करना होगा तो क्या होगा कि what they will do, they will hire some accountant or some chartered accountants or some other professionals for their day-to-day affairs, for their day-to-day compliances. जबकि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है. ये जो परसेप्शन है, एज ए लीडर यू शुड ऑल रिमूव दिस परसेप्शन कि नहीं भाई हम यहाँ पे कोई कंप्लायंस करने और अकाउंटिंग एंट्री करने या इसके लिए नहीं है. वी ऑल आर हियर एज ए लीडर ऑफ द प्रोफेशन. उसके लिए ये आना जरूरी है. लीडर होने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा ही बैठ के और आपको एक किसी सीट के ऊपर बैठा दिया कि साहब लीडर हो गए. यू हैव टू वर्क एट ग्राउंड लेवल. अगर आपने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, आपने ये नहीं समझा कि साहब अकाउंटिंग होती कैसे है ना, फाइनेंसेस मेंटेन कैसे किए जाते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू बी ए गुड लीडर. तो ये सारी चीजें भी जब आप लोगों से मिलते हो, आप जब बंद कमरे में एक कैबिन में बैठे रहते हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती. जब आप लोगों से मिलते हो तो समझ में आता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके से
अभी तो कंफ्यूज था क्या? हैं? तो वो क्या कर रहा है? चलो. So please be interactive. And the first topic is building excellence with integrity, trust, and transparency. Now here we are talking about a profession, and we are aiming at excellence, and we will achieve it through integrity, trust, and transparency. I think you will continue. So guys, please pay attention. Now first the speaker spoke about the contribution of members of the body since the establishment of the institute, right? So how have we contributed to the growth of the nation as members of ICI? So first of all, we have provided confidence to the investing public, right? So that they could invest their hard-earned money in the companies. We have also enabled those companies to finance their production, right? And in a way, we have created the goods and services which all of us happily enjoy today, right? So ICI takes great pride in contributing to the growth of the nation. Secondly, in the present scenario, ICI and the profession is in the country and globally facing important challenges which we will be addressing slide by slide, right? So the first challenge is the growing importance being given to disclosure of non-financial information. So any of you can tell me the definition of audit? It's a very easy question. Audit is an independent examination of financial information. Exactly. So audit covers financial information, right? But the need of the hour is addressing non-financial information, which could be. We will be covering sustainability reporting and viability reporting. But first of all, I would like to say that this challenge questions the definition of financial reporting and audit as well. Now another question. Can anyone answer what sustainability is? Very easy question. To hold the resources for the upcoming future. Right, right. So the important word is future. And sustainability reporting is something similar, disclosure and communication of environmental, social and governance goals. Now this is a non-financial item which will be required, we as auditors will be required to provide assurance in this regard as well. In fact, already the European Commission has issued draft standards and they aim at bringing sustainability reporting at par with financial reporting. The other important concern is viability reporting. Anyone knows what viable means? VIA. So ये अभी बात कर रहे थे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना? अभी तक जो जैसे उसने अभी ऑडिट का डेफिनेशन बताया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप चेक करते हो तो देन दैट इज द ऑडिट. और इन्होंने बात करी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप क्या सोचते हो क्या हो सकती है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि which is basically getting more importance nowadays,
और आप लोगों ने कभी कोई अभी रिसेंटली जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनका अगर इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट किसी ने देखा होगा तो दे कैन एक्चुअली टेल। देखा आपने? नहीं देखा? किसने देखा? श्री सीमेंट का किसने देखा है इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट? अच्छा, वो नहीं है यहाँ। तो you will find from these reports that there are various different type of information which are being given. कि जैसे उन्होंने टोटल कितना CSR पे एक्सपेंडिचर किया है, या टोटल कितने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है ना, कितने लोगों को से विमेंस को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, या ग्रीन एनर्जी की तरफ क्या कोई काम किया है क्या. So many informations are being given in the integrated annual report of these companies, and these are non-financial information. ये informations non-financial information. और looking to the present scenario, इन information का audit का भी एक auditors के लिए एक दायित्व हो गया. A responsibility has been assigned nowadays on the auditors also, that you have to audit these things. Or and it is again going to have more importance in time to come. तो अब आप केवल प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चल रहा है वो नहीं देखना है, वो तो देखना ही है. उसके साथ में ये सारी चीजें भी जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको करनी होती है, और आपको उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी करनी होगी. अभी एज ऑफ नाउ रिपोर्टिंग इज नहीं है, रिपोर्टिंग इज नॉट देयर. एज ऑफ नाउ देयर आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बाय द बोर्ड इनटू देयर एनुअल रिपोर्ट. बट आपने ऐसे 720 किसी ने पढ़ा है? क्या है ऐसे 720? ऐसे 720 अदर इंफॉर्मेशन तो वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट अपन एनुअल रिपोर्ट के साथ में देते हैं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ में आप जो कह रहे हो उसके साथ मैच है या नहीं है. तो अभी अपन अदर इंफॉर्मेशन में भी जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो दूसरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट या जो एनुअल रिपोर्ट है या कोई भी दूसरा रिपोर्ट मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस है, so we report that there is no contradiction between the financial report as well as non-financial as well as the other reports which are being issued by the companies. तो अभी आपको ऐसे 720 के हिसाब से भी केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक ही लिमिट रहना होता है. But now there will be verification by you on account of these other information also. हाँ, continue. क्या हुआ? पहले चेक नहीं करते. मेरे को दिख रही है. अभी एक बार वापस शेयर कर दो उसको. एक बार वापस शेयर करो. Okay, guys, please pay attention. We are talking about viability. So, I would like to explain what it is. It is basically the ability of a system or a thing to work or to succeed. Basically, something can maintain itself or not, right? So, this is another area of reporting. And in fact, in the UK, the government has proposed
that a company should bifurcate its life into 3 periods: a short term of 1 year, a medium term of 5 years, and a long term beyond 5 years. This is something similar to going concern, right? We will have to, as auditors, assess whether the company is right in its assertion or not. Second challenge that I was talking about is, as of now, it is not the primary responsibility of an auditor to find fraud in an entity, right? It is still the responsibility of the management. But since the investors are paying more and more money and they are expecting more and more from the professionals, so in the future, this might as well become the responsibility of the auditor. The third challenge is automation. Now, all of us know that technology has taken over the world. Right, so in the advent of technology, we as auditors will need to make greater investments in hardware, software, and training, both in terms of money, and we will also need to acquire new skills, right? Also, data analytics is something that we have all studied in intermediate. So this might replace our manual procedures that we follow in audit right now. The fourth challenge is audit failures and time inadequacy. Now, this can be easily overcome if the auditor and the auditee sit together and they speak about their resources and how they will be allocating these resources. And so, audit can be performed effectively in the provided time. Now, the fifth and the very interesting challenge is posed by an oversight institution. All of you might have heard about NFRA, right? So, basically, a professional body is kept under an oversight institution, and the aim of this institute is to oversee and regulate the affairs of the professional body, right? But the important thing to keep in mind here is that this oversighting body should not be intending to take over the professional body. You all must have heard about the NFRA case, right? The next thing here is that if a company fails, it can be because of a lot of reasons, like maybe money problems, management problems, etc. Right? So it doesn't always mean that an audit failure led to that company failing. The third point I would like to explain by taking an example. So let's take an example. If Shreyansh is accused of professional misconduct. So now the inquiry and the resulting action on Shreyansh, how it will be done. Now the speaker spoke about if we have to challenge him, the body should contain his peers, members of the professional body in which Shreyansh is there already, because all of us as members know the practical problems he might have gone through in his work, and if he failed, we would be able to assign him the penalty because we know his work much better. Right? Also, it is necessary that while Shreyansh is being punished, there is enough distinction made in negligence, gross negligence, error, and willful default. We all know what error is, right? What is negligence? What is gross negligence? Exactly. Gross negligence is a mistake जो बहुत ही careless इंसान भी नहीं करेगा. And what is willful default? It is as close to as a crime. So we need to keep in mind while we are punishing Shreyansh for his misconduct. Now we have discussed all the challenges. Now the next thing is that ICAI is standing on the foundation of trust. Okay, our clients trust us, and that is why they are giving us money. And the government trusts us. That is why it deems us responsible. So there is a trust equation given by Professor David Maister. It says that trust is the product of credibility, reliability, and intimacy divided by self-interest. So basically, trust increases where credibility, reliability, or intimacy increases, and trust decreases when self-interest increases. How are we going to maintain this trust?
We need to remember at all times that we are a professional. So wherever we are going, we are carrying the tag of ICI with us. We are carrying a brand image and we can never lose it. As professionals, technical competence, due care, commitment, ये जो सारे words हमने audit में पढ़े थे, these are important to be kept in mind. Also, we have multiple responsibilities towards ourselves, our clients because we are billing them, our colleagues because we are representing them, the profession and the society, most importantly because we are using its resources. The fourth thing is, as a CA, we have to always keep a track of the amendments, the updates, whatever is going in the market, right? So we can never stop learning, and true knowledge is always ourselves to know. We cannot hold anyone responsible for acquiring knowledge. My second topic is public financial management reforms. Does anyone know what public financial management is? I will ask anyone directly then. So government has basically fiscal policies and expenditure policies, right? So public financial management is taking care of these policies and covering the budget cycle. The budget cycle is budget preparation, execution, and evaluation. See, if a country has a sound PFM system, it will lead to needed budgetary outcomes. Okay, there will be fiscal discipline, demand supply में हमने ये सब पढ़ा है. There will be strategic allocation of resources. Basically, what the government is aiming at, it will receive, and the citizens will be happy because the government is providing them the appropriate services. But how will we know if a country has a sound PFM system or not? What is the indicator? Is there any scorecard? So there is a scorecard, the Public Expenditure and Financial Accountability Framework. It gives a score basically, and it measures 31 PFM performance indicators through 7 PFM pillars on a scale of A to D. So this is how the entire scorecard is given. And the 2022 scorecard, Global Report on Public Financial Management, gave these 5 highlights, which 5 people from you have to explain. So if you all don't raise your hands voluntarily, I will pick someone up. First point. The governments are performing well in accounting, the revenue and marketing, and they are implementing internal controls as well. And they are also looking forward to any contingency revenue reserves or any expenditure regarding which will dilute their contingency reserve. So what type of internal control Internal controls in the we have done a government entity audit, so we can refer that what are the internal controls they are maintaining. I don't specifically know any internal controls implemented now. So anyways, these internal controls will be discussed later in the slides. Okay. Second point. Tarun, would you like to? Okay, I'll explain. It basically says that government aims how much it will spend in the upcoming year, right? So they are saying that government is able to meet that target in the total, but in the composition, जैसे कि defense sector में इतना करना है, but in the composition, the sectors are mismatched. In the total, it is able to match its target, but not in the composition of the planning. The third point, very easy. Anyone from the junior batch? There are prizes for these answers, by the way. You can try. You can try. So basically, it is saying that
more than 80% of the countries don't submit their financial reports about external audits on time. Yeah, exactly. So it is given that within 3 months, financial statements are not provided for their audit. Very simple. Clap for our foreign volunteer participants. Now the fourth point, if you can try, otherwise I'll explain. If you are not trying, then you have community learn, right? I'll explain. So for any public contract, the government releases tenders, right? So if there is a contract like to build a bridge, there are tenders awarded for that. So this point is trying to say that nearly 63% of countries awarded those contracts without any competitive methods. जैसे उस टेंडर के लिए ऑप्शन हो सकता है ना, बिडिंग हो सकती है कि कौन सबसे ज्यादा प्राइस देगा. But 63% of these countries did not use any competitive methods, and this could lead to a loss of money for the country. Money is a scarce resource, right? The fifth point. Rana. The fifth point is saying that the pandemic revealed that many of these countries had PFM systems which were not resilient. So if any emergency came, then those PFM systems could not actually last. Now these global trends in PFM show that if we include economists, accountants, policymakers and administrators from the government, we could create path-breaking policies for financial management, and we could minimize the money loss excessively. Now the accounting profession, apart from being the fulcrum of these aspects, can influence the PFM in the following ways, okay? So we can play a pivotal role in helping in the internal controls of the government. Also, we can minimize wastage, inefficiency, fraud, because we are providing these services anyway. So we can do this for the government and help in their financial management. The third point is similar to something I explained, that in providing contracts for goods, services and public works, there is a lot of loss of money because the governments are not using competitive methods. Now, what we can do as accountants to be a part of PFM systems of a country? Now, first of all, PFM should be included in our curriculum, and this is how we learn, and this is how we'll provide services in the later stage. We can also address needs of climate change, gender sustainability reporting if we are made to learn these things, right? The other thing is we can create a need. We can explain to policymakers, administrators, economists that we are actually capable of doing this job. Also, creating a greater understanding amongst stakeholders that we are in fact capable and we will do this job wonderfully could lead to increasing the scope of chartered accountancy. And so the speaker with this aims for the World Congress to become a beginning for accelerated improvements to PFM systems. This was all of my part. I would like to invite Vinay. So, good afternoon, everybody. Before I would like to start my part, I would like to ask the same question. What is sustainability reporting? Sustainability reporting, can anybody of you tell me? She explained at the previous slide. Okay, Namukar, please do. Sustainability reporting just wants the auditors that whatsoever audit is performed by them, if later on they are asked on how the work was conducted, they are, I mean, the documentation in the work is basically future report. Yeah, you can when you are asked that how the work was done, you can very well explain all the documentations. Yeah, anyone from the online participation? Abhishek Agarwal.
अभिषेक अग्रवाल, Okay, so basically, Namokar was right. Sustainability reporting has no set format, but broadly involves disclosure of a company's environmental, social, and governance goals and communicating the company's progress and efforts to reach those goals. It means we have all have studied about only balance sheet format, P&L format, accounting disclosures and all, but we have not made attention in sustainability reporting. अभी इतना इसका कुछ importance नहीं है, but only few of the listed companies have been made. It has been made mandatory for them to publish this in ESG reporting. So अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक मैंडेटरी नहीं है तो आपको फ्यूचर में जाके इसकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अपने ऑडिट्स में, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. मतलब कि अभी सिर्फ हम डिस्क्लोजर्स वगैरह के बारे में बोलते हैं. फिर डिस्क्लोजर्स हमने इतने दिए हैं कि नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर्स के बारे में बोलते हैं, बट आगे जाके अपने को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे, जो कि हम देखें ESG. you have to share the screen again. तो गैस आ रहा है. Yes. So when आप इसी पे डिस्कस करो. हाइपर लिंक कर रहा है तो उसके बारे में तो स्लाइड शो बंद कर देना, स्टॉप शेयरिंग कर लो, तो वापस से यहाँ से स्टॉप कर दो. अब वापस तो यहाँ से स्क्रीन शेयर वापस कर देना, स्टॉप करवा दिया, वापस से कर देना, यहाँ से कर देना. बस अब साइड, अब यहाँ से स्लाइड शो कर दो, पीपीटी की स्लाइड शो कर दो. Now it is coming. इसको स्लाइड शो कर देना. बंद करके चालू करते हैं एक बार और इसको पीपीटी अब वापस
वहाँ पे जाके ना स्क्रीन शेयर पार्टीशन और एक बार Yes. एक बार इसको निकाल के वापस लगा नहीं लगा वापस तो आ रहा है इसकी भी स्लाइड से आ रही है तो सर्किट की छोटी स्क्रीन आ रही है आप यार वही कर लो ना। अरे यार इसकी राइट से हैंग हो गया यार दो बार रुकिए ये वाली बंद कर देती हूँ हरी लगी हाँ तो ये वाली इसमें स्लाइड शो तूने स्क्रीन शेयरिंग वो वाली टेक्स्ट इन सब चीजों को पहले ही देख लिया करो यार, बार-बार इसको दो स्लाइड शो बंद करना वैसे चलाना स्लाइड शो भी बिना चलाना ऐसे तो चलेगा तो मैं इसको टाइम तो दे आप बिना स्लाइड्स के कर लो ना, वो रिपोर्ट खोल लेना उसको। So at the class start, in the starting of the class, when sir asked you that how many of you have seen ESG report, so most of you haven't seen it. So I will show you a practical exposure of this ESG report of a company which you all know, Apple. iPhone, most of you are using. If not now, then in future for sure. कोई सैमसंग नहीं कर सकते हैं मैं कर दूं सैमसंग का ESG रिपोर्ट इसने देखा नहीं। डायरेक्ट एप्पल से फर्स्ट कौन सा बैड क्वेश्चन So when it will be started, I will show you the ESG report. So basically, these disclosures, the sustainability reporting, are needed to bring together financial and non-financial information that provides a comprehensive picture of enterprise value and environmental, social, and governance impact for all stakeholders. So basically, I want to conclude that you as a chartered accountant, you have to see this as in a very important manner, because in future you have to deal with it in companies. You have to give advice to the directors, the managers, that it is mandatory for all. And अभी इतना mandatory नहीं है, but अभी भी 100 listed companies को mandatory है कि ESG reporting करनी है. इसलिए Apple की जो ESG report है वो अभी मैं आपको show करूँगी practical for your practical. So this is the ESG report of Apple, environmental, social. स्क्रीन शेयर में माइक्रोसॉफ्ट वो विंडो में जाके वो कर देना उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में जाके वाला पेज करना ओके चेंज हो गया ना पेज खुल गया माइक्रोसॉफ्ट खुल गया So Apple अभी एक बड़ी कंपनी है, इसलिए अभी ESG रिपोर्टिंग इसके लिए मैंडेटरी है, but in future all the companies will have to follow this. चेंज कर देना So they are basically explaining that what are their approaches towards environment, towards society, their various stakeholders, suppliers, communities, governance,
their customers and all, and their commitment to transparency. Transparency. Can anybody explain me what is the meaning of this word transparency? True and fair. You are correct. So here it is. You can see Tim Cook here. What happened? So here it is that the climate change, that they are explaining that how the climate is changing. So what are the steps they have to take towards climate? They are using their low carbon design in their products and energy efficiency, so that they will increase energy efficiency at the facilities, and renewable electricity, direct emissions abatement, carbon removal, low carbon design and all. कोई बता सकता है ये लो कार्बन डिजाइन क्यों कर रहे हैं? इसमें एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग। अडैप्टर निकाल लिया। Now this is carbon footprint. मतलब they are basically focusing on the low carbon products. Carbon removal sources, this innovating packaging to reduce our footprint. Mapping. So basically, you can see that this very well-known company is doing this ESG report. So it is of much importance, and we also have to give advice in the future to the manager and directors in which we are auditing. So you can see the practical exposure if anybody has not seen yet. फिर आप शेयर करो। So my first topic is the accountancy profession, building trust and enabling sustainability. So what comes to your mind by reading these 5 lines? Please participate. Building trust, but how we can build trust? A chartered accounting profession can build trust. Code of conduct and Professionalism, professional duty, By following the professional ethical requirements. Yes, because all of the stakeholders are dependent on us, that we will make sure that a good quality report and good transparency will be followed by the companies in which they have invested. So we have to make it sure. So my first topic is sustainability as a mandate and an opportunity. क्या ज़्यादा important है, building trust for your client or for the ICI? or stakeholders. For ICI, because we as a For stakeholders. for ICI for stakeholders, because our profession is based on ethics. You know, ethics are like ethics मतलब हमको professionalism करना है, ना कि clients के पैसों पे रहना है. We have to maintain a professionalism. ये So आपका स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। So I think इसने ये changed a lot of things. कि trust किसका? But it's not the trust of client. It's trust of stakeholders, including client. ऐसा नहीं कि क्लाइंट के लिए आप गलत भी तो नहीं कर सकते ना। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि यार मेरे को जो बैंकर्स हैं या जो टैक्स डिपार्टमेंट है तो उनको क्या बोलते हैं ना खुश करने के लिए मैंने क्लाइंट का कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, ये भी नहीं हो सकता है। जो है नहीं वो भी लिख दिया। सो ट्रस्ट इज बेसिकली टू हैव योर इंडिपेंडेंट व्यू on the affairs
of the client. Yeah, 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 and that should be that is being actually relied by all the stakeholders. तो stakeholders के अंदर आपके investors भी हो गए, bankers भी हो गए, आपके और कोई prospective investors भी हो गए, tax departments हो गए, so client भी हो गया, employees भी हो गए, shareholders भी हो गए, directors भी हो गए, promoters भी हो गए. Everybody is stakeholder into that client of whom you are certifying the various affairs. तो अभी ये क्या है कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम एज एन ऑडिटर काम करते हैं फॉर द क्लाइंट, क्योंकि हमें लगता है कि यार अपॉइंट तो हमें क्लाइंट ने किया है, ठीक है ना. कुछ जगह मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट क्लाइंट के थ्रू नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू है, तो हमें लगता है कि फीस तो क्लाइंट दे रहा है. तो कहीं ना कहीं से तो क्लाइंट फीस दे रहा है नहीं दे रहा है ये एक अलग इशू है. बट मोमेंट यू आर बीइंग एंगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग टू स्टेकहोल्डर्स, तो आपका ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन द ट्रस्ट ये होना चाहिए कि आप उसको इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करो, whatever the requirement of laws are there. Yes. हैं? So please pay attention. Yes. Sustainability as a mandate and an opportunity. So this topic is of much importance that IFSC has established International Sustainability Standards Board (ISSB) in November 2021 recently for sustainable development, notably the implementation of Sustainable Development Goals. तो जिस तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है IASB, जिस तरीके से IAASB है इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, in similar way in November 2021, मतलब अभी एक साल ही हुआ है, this sustainability board has been established. This shows the importance of the subject as of now as compared to the in the earlier period. कि अभी यहाँ पे एक पूरा board आया है, and then this board will again establish so many standards that how to actually go for the audit of these ESG and various other matters. Yes, this for this particular reason, it is not implemented on all the companies. By in future, it will be implemented. So, professionally qualified and licensed accountants have the requisite expertise, objectivity, integrity, commitment to professional standards, and oversight that are essentials for instilling trust in ESG reporting. It means these four words: expertise, objectivity, integrity, and commitment. We have all marked up in audit CA. So you all will be familiar from that. So professionally qualified and licensed accountants have the requisite expertise. Means we as a chartered accountant have the requisite expertise, objectivity, and integrity to take trust in this ESG reporting, and we have to do make it further. There is an enormous opportunity for a profession in the market for these services. The market will reward early adapters to new demands and new opportunities in the sustainability space. So अभी हमारे पास एज अ प्रोफेशन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इस चीज की इंपॉर्टेंस समझे और हम आगे जाके फ्यूचर में मैनेजर्स डायरेक्टर्स जिसकी भी हम ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी को बताएं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी कंपनी के लिए. So the importance of trust. So before starting, I would like to start it with a common line. Trust can be is built up in number of years ago, but it can be destroyed in seconds. Trust takes years to develop, but it can be destroyed in seconds. So trust in the system is lower when taxpayers perceive higher level of corruption and the diversion of public funds. So अभी जब मैंने लाइन बोली तो आपने शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया होगा, बट यहाँ पे मेरे ट्रस्ट का मतलब है जो टैक्सपेयर्स जो हैं
we as a taxpayer, what we trust from the government and how our funds should be utilized. So the public sector is pivotal to effective responses to many overlapping global crises: COVID, inflation, disrupted supply chains, the food shortages gripping the world, and of course, climate change. It means that we as a taxpayer, what we accept from the government and how our money should be utilized. For example, you have seen the construction projects are going on from long years and they are not yet completed. So it shows that our money is not utilized in an effective and efficiently manner. So if a government is starting a construction project, so they have to make sure that it is going as per it is planned, and it should be completed within the period of time that it was decided earlier. आपने देखा जैसे इसने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करी, आपको जयपुर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर इतना रुपया खर्च हो गया बट इसका कोई यूज ही नहीं आ रहा है? तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पब्लिक ट्रस्ट का ब्रीच है, इट्स ए ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट कि आपने सरकार को चुना, सरकार ने कहा कि मेट्रो बनाएंगे और वो उन्होंने मेट्रो ऐसा बनाया कि भाई हाँ मेरे को 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर, क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, है ना, तो टिल देन मेरा एक 7-8-10 किलोमीटर का मेट्रो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद 10 साल 5 साल 7 साल निकल गए, nothing has happened beyond that 7 year 8 year 7-8 kilometers or 10 kilometers whatever. तो इतना पैसा आपका लग गया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार या जो it has happened lot of things in at lot of places. एक केवल जयपुर मेट्रो की बात नहीं कर रहे हैं, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं। तो वो जो ट्रस्ट है, तो अभी मान लीजिए कि आपको उसका ऑडिट करने को दे देगा कि साहब इसकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दीजिए कि भाई ये जयपुर मेट्रो में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ या नहीं हुआ। तो आप क्या लिखोगे एज एन ऑडिटर? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैटर नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये मैटर है कि हाँ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी एग्जीक्यूटर्स हैं, तो एग्जीक्यूटर्स ने अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू दी विशेस ऑफ स्टेक होल्डर्स उसको एग्जीक्यूट किया या नहीं किया, ये आपको जज करना है, ये आपको रिपोर्ट करना है। ऐसे केस में क्या होगा कि साहब ये रिपोर्टिंग हुआ है, क्योंकि जनता की तो मंशा है कि हाँ मेट्रो होना चाहिए, लेकिन वो फिर पूरा शहर में इस तरीके से होना चाहिए दैट इट कैन बी एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय द पब्लिक easily and it is fruitful for them. वो नहीं हो रहा तो it is breach of So yeah, the UN estimates that USD 5 to 7 trillion in investment is needed annually to achieve the sustainable development goals. At the same time, about half of that amount is lost to corruption each year. So you can think of how much amount is being spent in corruption each year. So how the money is wasted. The apathy of taxpayers is driven by corruption across the public sector, which in turn drives poor service delivery. So basically, to conclude this slide is that the importance of trust means हमें government पे trust है कि वो हमारा पैसा अच्छे से utilize करेगी. But can we say it by confidence? No, because our money is not utilized as we have expected. Now accountants will save the world. So this is a very funny line that how we can save the world. We do. Here accountants mean or you all can save the world, but how? Huh? We are uniquely positioned to capture, analyze, report on and assure sustainability information. We have skills and competencies that are critical for connecting financial and sustainability information to meet stakeholder demands and to help rebuild and maintain trust. We have global reach like no other profession. It means we are uniquely positioned, means we are only the professionals who are capable to capture, analyze, report on and assure sustainability information. So this line for connecting financial and sustainability information, अभी हमने इसके बारे में बात करी, तो कोई बता सकता है कहाँ पे आई थी?
Yes, right. So as technical experts with a strong ethical foundation, we can help public authorities to implement policies effectively and efficiently and with accountability. It means that as a technical experts, we can do that. We can help the public authorities to implement policies effectively and efficiently. So how we can do that? कि हम अपने डिस्क्लोजर दे सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, मटेरियल कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है और कितना यूज हो रहा है, तो ताकि इससे हम सिटीजन्स पे ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं. As profession, we will bring greater transparency and integrity to public finances. As a servant of the public interest, we will advocate for policies that will create a better world. So all participants, not only we are responsible, but all the participants, auditors, management, board, audit committees, regulators, and many more must act to improve the audit process. So market economic theory. So my next discussion will be on market economic theory. The market economic theory is well known across the world. Adam Smith, the author of The Wealth of Nations, said that if everyone works for themselves to maximize their own profit, society will most effectively and efficiently create wealth through the invisible hand. Now let us understand this definition with an example. There are two bakers. They will if they will compete with each other, then they will give a result that they have best quality product at a lower prices. क्योंकि अगर वो एक दूसरे से compete करेंगे तभी उसको लगेगा कि वो सामने वाला क्या बना रहा है, उस accordingly वही चीज बनाएंगे और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लाएंगे विद द लोअर प्राइसेस. तो इससे इनविजिबली भी हमारा इफेक्टिव, मतलब हमें दिख नहीं रहा है कि कैसे हमारे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहे हैं एट अ लोअर प्राइसेस, बट फिर भी वो compete करके एक दूसरे से वो एज अ मार्केट डेवलप कर रहे हैं. Problems of market economy. Losers are not able to survive in the market. It means that if there are two competitors and one has the lesser resources than the other, so the other one who has the lesser resources will not override the one who has the more resources. तो इसलिए जो losers. कौन सी कंपनी आपके दिमाग में आ रही है? By looking to this slide. Vodafone Idea. वोडाफोन क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रही है? क्योंकि उसके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है. तो ये कहीं ना कहीं इट्स प्रॉब्लमेटिक फॉर द यूजर्स. क्यों? क्योंकि एक बार अगर सारी कंपनीज आउट हो गई है ना, या मार्केट में बहुत ही कम सर्विस प्रोवाइडर रह गए, तो देन यूजर्स विल नॉट बी बेनिफिटेड. यूजर्स को आगे जाके लॉस हो जाएगा. अभी तो आपको सब कुछ लग रहा है कि नहीं अपन एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ या एक ही पर्टिकुलर कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट एट द एंड जब बाकी की कंपनीज वाइप ऑफ हो जाएगी, देन यू विल बी एट लॉस. So second problem is that market economy does not guarantee the maximum benefits for the society. Means जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी, ये मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं गारंटी कर सकती. क्यों? क्योंकि जो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उनका ऐसा कंफर्म नहीं है कि उनके पास इक्वल रिसोर्सेज हो, और अगर इक्वल रिसोर्सेज नहीं हुए तो वो एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर पाएंगे. और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनविजिबल हैंड के थ्रू हम गारंटी कर सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी. So corruption and the role of government. So a corrupted government means a government that destroys the social trust. So types of corruption. So please read this and I would like to ask you. Explain. Petty corruption. Petty corruption. हाँ बता. तो लेते ना बाहर. क्या? तब वो गाड़ी रोक लेते तब लेते हैं. So petty corruption occurs between low level, the front level government officials and civil petitionaries. Petty corruption is the easiest to detect and punish, but its effects are limited. It means it occurs between low level and government officials and civil petitionaries. It is very easier to detect क्योंकि वो ये बहुत छोटे लेवल पे होता है, इसलिए. Grand corruption occurs between high level government officials and a particular person or an organization. Grand corruption includes granting a specific individual or an organization the privilege to participate in a state project such as the construction of an airport,
or a highway without going through a fair and proper competition. It means that अगर गवर्नमेंट के किसी से फैमिलियर टर्म्स हैं तो वो सिर्फ उसी को वो प्रोजेक्ट दे देंगे, इनफैक्ट वो नेगोशिएशन भी नहीं करेंगे और लोगों से कि वो कैसे उसको नेगोशिएट करके उसकी प्राइस कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं करेंगे बिकॉज दे आर ट्रस्टेड ऑन ओनली वन इंडिविजुअल फॉर whom they are familiar. Now political corruption. Political corruption includes launching a less urgent state projects over the most urgent one, or not choosing the best location for a bridge or an airport to obtain the favor of a particular set of constituents. Political corruption is the one that causes the most damage and harms to the society. It means that the है कोई जयपुर में एग्जांपल लोकेशन वाला? नहीं, उसके अलावा तेरे घर के पास है। हाँ, वो जो ब्रिज है, भारत जोड़ नहीं भारत है, खासा कोटी वाला ब्रिज, is that properly located? है क्या? नहीं है। प्रॉपरली नहीं है ना, वहां पे ऊपर पार्किंग है वो, क्योंकि व्हीकल्स तो आते ही नहीं है, तो ऊपर लोग व्हीकल्स पार्क कर देते, होता है ना, देखा तुमने? पार्क होती है ना वहां पे, बसेस या ये लोग पार्क कर देते हैं कि इधर से व्हीकल तो कोई आ नहीं रहा है, और वो वैसा ब्रिज बना हुआ है, तो वो ब्रिज नहीं बनाया, वो पार्किंग बनाई। सर पार्किंग की बहुत नीड है जयपुर में। बट ऐसी पार्किंग नहीं है। और मेट्रो का क्या है? मेट्रो में ये है कि भाई यहाँ बारिश में कोई स्कूटर पे जा रहा है तो वो भीगे नहीं, इसलिए इस तरीके के इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं कि अच्छा ये मेट्रो क्या बनाया ताकि बारिश में स्कूटर पे लोग भीगे। तो ये these are the political corruption. So, role of leaders with citizenship in building trust. In a modern society, society leaders and people equipped with citizenships are essential to build and maintain trust in the market. We need leaders who take the initiative and set an example in the market. Citizenship means that let the public interest take precedence over the individual interest. It means our individual interest will not override the public interest. हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें पूरे public के बारे में सोचना है. It means that individuals can maximize their own benefit as long as it promotes the public interest, or at least it does not cause harm to the public. For companies, citizenship is called corporate social responsibility. So what do you mean by this term corporate social responsibility? Which percentage of Yes. तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ फिक्स परसेंटेज। What is the fixed percentage? So now accountants should play a key role to build trust. So this slide is about, will artificial intelligence replace human creativity in future? So we will explain, or we will understand this slide by a debate. If anybody wants to come voluntarily, then they can, otherwise sir will choose. The debate is regarding the same topic which I have discussed. Artificial intelligence will replace human creativity or not in the future. So basically, two students will be selected. One will speak in the favor of this topic, and the other one will speak in against of this topic. So they have to debate, and then sir will decide who is the winner. So anybody wants to come voluntarily for a debate? You have to win. Will replace the other, you have to speak in favor or against. So any two Varenya is in favor. सर इजी वाला हैं? मैं टेबल में You think artificial intelligence will replace human creativity? And who is speaking it against?
अगेंस्ट में फेवर तो मेरे फेवर में नहीं बोलती So who is speaking again? फेवर में पहले So you favorite is artificial intelligence will replace human creativity and will not replace. Please keep your point. Very nice. I think artificial intelligence will replace human creativity. And the recent and the most recent example that I have seen is the CCH audit automation that I have got. So we discussed with the vendor who was selling this app to us that how we have to work with it. That it gives us a particular checklist that हमें ये सारे points check करने हैं. तो सर ने खुद बोला था कि ये आपका एक लिमिटेशन है कि हम बहुत सारे points check करने के चक्कर में वो चीजें भूल जाएंगे जो हमें as an auditor खुद अपने पर्सपेक्टिव से चेक करनी है. तो एक तरीके से अपनी क्रिएटिविटी जब ऑडिट कर रहे होंगे तब उस चेकलिस्ट पे ज्यादा ध्यान रहेगा और जो हमें एज एन ऑडिटर चेक करना था वो कम जाएगा. तो ये एज एन ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू एक तो ये चीज होगी. और ऊपर से सर एक पॉइंट You answer that. You have to counter on that point. So my question is, who was really responsible for developing that checklist? Is it an artificial intelligence, any robot or a human being? Not even just. even if an auditor is making the checklist, but You just said that we have a prescribed. Why are you speaking? This is a debate again. even if an auditor is creating the checklist अगर उससे कोई point overlap हो गया जो उससे उस टाइम नहीं याद रहा तो आप जब कर रहे हो ऑडिट तब तो आप वही पढ़ रहे हो ना. खाली आपका माइंडसेट तो ये हो गया कि हमें चेकलिस्ट पढ़नी है. ये नहीं कि हमको चेक करना है कि आप में कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या फिर ऐसा कुछ. तो अपन लिमिटेड हो जाएंगे. नहीं, चेकलिस्ट तो जब करेंगे ना वर्क करने के बाद कि अपन ने चेक ये सब कर लिया तो वो वर्क तो पहला पॉइंट हो जो गया. उस आपका प्रोसीजर है ड्यूरिंग द ऑडिट आपको ड्यूरिंग द ऑडिट आपको भरना है बट आप उसको कंसीडर करते हुए अपने ऑडिट ऐसे. बट उसमें जो भी न्यू पॉइंट्स ऐड होंगे ना वो अकॉर्डिंग टू ऑडिटर होंगे एंड इट इन्वॉल्व्स इट्स क्रिएटिविटी. और एक और पॉइंट था उसके अंदर एक और पॉइंट होगा कि जब वो कंटिन्यूसली अपडेट होती रहेगी ना चेकलिस्ट तो उसके लिए भी तो एक ह्यूमन और एक ऑडिटर खुद ही चाहिए. अरे व्हाई वी आर गोइंग ऑन द चेकलिस्ट पॉइंट. नहीं, इट्स अबाउट एआई. मतलब वो रिप्लेस करेगा कि नहीं तो आपके टॉपिक से बाहर जाना. क्रिएटिविटी तो प्लीज स्टे इन द टॉपिक. हर्षित कम ऑन. क्रिएटिविटी तो रिप्लेस हो गई ना. मैं हाउ क्या अगर हमने खाली चेकलिस्ट कंसीडर हमने खाली जो एप्स के थ्रू हमें मिला होगा. बट अगर वो चेकलिस्ट को ही कंसीडर कर रहा है देन ही इज नॉट अ गुड ऑडिटर. आप अच्छे ऑडिटर को कंसीडर करिए, वो सब कुछ कंसीडर करेगा. चेकलिस्ट ऑडिट करने के बाद साथ में नहीं बढ़ते. नहीं, इसमें मेरे ख्याल से देखो ये जो चेकलिस्ट वाली बात है और ये है that is nowhere basically a kind of artificial intelligence है ना. वो तो अभी जो आप बात कर रहे हो वो तो केवल डॉक्यूमेंटेशन और उसकी बात कर रहे हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग एल्स कि भाई जो टोटल कितना डाटा है उस डाटा में से थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई स्पेसिफिक मान लीजिए कि रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे आउट ऑफ दोज डाटा. जैसे आज अपन मान लीजिए कि जब भी अपन को एक्सेस कर रहे हैं या ये इंटरनेट चालू है और इंटरनेट चालू और अपन यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं ना, जैसे अपन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं. सो देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस would actually give certain advertisements related to the audit software over here. आ तो नहीं गया, देख लो एक बार. So that is what they are saying कि सब जो ऑडिटर एज एन ऑडिटर हम जो काम करते हैं है ना, जैसे इन्होंने शुरू में एक स्लाइड में लिखा था कि जो सैम्पलिंग वाला मेथड है दैट विल आउट गो, वो चला जाएगा क्योंकि
based on the artificial intelligence, one can confirm 100% whether the relevant things have been followed or not. है ना? जैसे मान लीजिए कि जीएसटी का कंप्लायंस हुआ है या कोई किसी पर्टिकुलर मतलब एम्प्लॉयज के केस में, सबके केस में पीएफ और ईएसआई गए या नहीं गए, है ना, या और भी कोई दूसरी कंप्लायंसेस हुई या नहीं हुई. सो दैट विल बी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ. तो जो एक आपका क्लैरिकल वर्क है, दैट कैन आउटगो, वो जा सकता है ना, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकता है. लेकिन जो काम आपका क्या बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाला जो काम है, जिसके अंदर बेसिकली आपको मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करना है ना, या उसने नए पॉइंट्स को कंसीडर किया है या नहीं किया ये देखना है. तो उनको बेसिकली फॉर दैट ह्यूमन इंटरफेस विल बी रिक्वायर्ड. तो इसके लिए क्या है कि एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप कंप्लायंस को ज्यादा, कंप्लायंस यू शुड लर्न. ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कौन सा फॉर्म जाना चाहिए, टोटल्स एंड ऑल दिस यू शुड लर्न. बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव ए विजन कि नहीं यार ये चीजें मेरे को ग्राउंड लेवल पे करना तो आती है, मैं जानते तो हैं हम इसको, लेकिन ओवरऑल जब ये इस सिनेरियो हम आगे काम करेंगे आफ्टर when you will be qualified as chartered accountant or even today those who have qualified, तो ये artificial intelligence का रोल ऐसा हो जाएगा जिसमें you have to be more knowledgeable and you have to apply your knowledge practically more for the purpose of all these things. तो वो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा whether you want to be replaced or not. अगर आपको replace नहीं होना है तो आपको एक अलग कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल बनना होगा. रिप्लेस होना है तो फिर वो तो हो ही जाओगे. So you can put forward वो your तो फिर We always need a अगेंस्ट में इतना तो बोल दिया. एक पॉइंट तो तेरे को भी बोलना पड़ेगा ना. अरे 3 बोले थे. चलो आगे चलो. So many expected that the accounting profession was one of the first professions to be replaced by artificial intelligence. Over the last decade, it has been proved wrong. Rather than being replaced, the accounting profession has embraced technology to elevate routine, lower value tasks and has been moving towards more value creating tasks. अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, आज अगर अपन जो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं या जो टोटल आपका इंडिया का इकोनॉमी का जो वैल्यू है ना, वो जैसा हम टारगेट कर रहे हैं कि 2025 तक जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, है ना, 2050 तक कह रहे हैं कि 40 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा. सो जब ये इकोनॉमी इतना बढ़ेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर नहीं होगा ना तो ये इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकता है ना. ये इकोनॉमी क्यों बढ़ा, पहले भी क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन. इसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ा है. तो जब आपका इकोनॉमी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव more work. Whether artificial intelligence in this growing economy would help you to ensure your reportings, है ना. तो इससे आप घबराइए मत, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी अगर बढ़ रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऐसा टेंशन नहीं है. So my viewpoint is that artificial intelligence will not replace human creativity and it certainly can't deploy ethics, judgment or professional skepticism. The main point that you should discuss is professional skepticism. Artificial intelligence can't replace that. In the era of artificial intelligence, professional accountants have become more essential and valuable constituents in the market economy. So professional accountants who have the code of ethics to observe are still essential in the era of artificial intelligence for the market economy, as they stand for the public interest when the organization is in conflict with the public interest. They will be a key element to lead market economy to be successful. It means that artificial intelligence can't do everything because only humans know that what is the importance of trust of the stakeholders. Artificial intelligence can't do that. So now on next slide we are meeting our stakeholders need.
The first is IFRS, International Financial Reporting Standards. IFRS stands for International Financial Reporting Standards. As indicated within the title, these standards are aimed at worldwide. These accountable entities. आपको क्यों लगता है कि IFRS क्यों एस्टैब्लिश हुआ? मेन मोटिव क्या था IFRS एस्टैब्लिश होने का? Yes, because in this interconnected world, we want a high quality financial reporting ताकि जो investors हैं वो उस financial reporting में trust करके invest कर सके money. So Indian accounting standards. The Ind AS is notified under Section 133 of the Companies Act 2013 have been formulated keeping the Indian economic and legal environment in view and with a view to coverage IFRS standards as issued and copyright is held by IFRS Foundation. It means Ind AS was formulated in accordance with the IFRS only, but it was formulated keeping in view of the Indian environment and culture. It is also a testament to the important work undertaken by ICAI, MCA and NFRA to align the Ind AS closely with the IFRS accounting standards. So वो कौन सी 3 bodies थी जो इस important work को ले रही थी कि Ind AS और IFRS एक दूसरे से align करने चाहिए? कौन सी 3 bodies थी? and NFRA. The IASB remains hopeful that in due course the carve-outs can be removed so that the companies in India can harness the full benefits IFRS accounting standards. It was not NFRA, it was NACAS. Carve-outs. IASB work plan. IASB has added 3 accounting technical projects to their future work plan. First accounting project is that comprehensive review of our intangible asset standards IAS 38, which is more than 20 years old, and the statement of cash flows and related matters, and accounting for climate related risk in financial statements. So these are the 3 plans which IASB is looking forward. First, that Ind AS, and third is climate risk in financial statements. So now good afternoon. I would like to start my topic with better information makes better decision making. Better financial information, helps the investor to make better decisions. As discussed by Ginny, IFRS is designed by International Accounting Standard Board to bring consistency to accounting language, practices and statements, and to help the businesses and investors make educated financial analysis and decisions. IFRS acts as a global accounting language. Investors need high quality, reliable, and relevant information on sustainability matters such as climate and other ESG issues. So IFRS Foundation established the ISSB as a sister board to IASB, responsible for developing a truly global baseline of sustainability disclosures to further inform economic and investment decisions. The foundation says it set the standard to bring transparency, accountability, and efficiency to financial markets around the world. IFRS believes that the provision of rigorous and reliable information, it would promote better decision making. Benefits of IFRS: first is transparency. IFRS enhances the international comparability of financial information, and it would ensure better decision making. Accountability: it helps in bridging the information gap between the investors and
the people to whom they have entrusted their money and efficiency. It would help the investors to assess the risk and opportunities and thereby improving capital allocation. ISSB, filling the information gap. One aspect of ISSB work is the role of sustainability information meeting broader public policy objectives. The ISSB has a global and multi-location presence, and it would work in close cooperation with IASB and ensure the connectivity and compatibility between IFRS accounting standards and IFRS sustainability standards. Intention is for the ISSB to develop standards that will require the companies to provide all the material information related to sustainability matters that are relevant to investors' decision making, including thematic and industry-based requirements. The next topic is essential role of ethics to public trust and a more sustainable world. Over the last 2 decades, we have witnessed an unfortunate number of corporate scandals and collapses. One major accounting scandal was Satyam in 2006 to 2008. And कुछ reasons थे उन accounting scandals के and professional behavior, unethical behavior, inappropriate accounting, and much more. And beyond direct and indirect impact, these events had a severe impact on workers and their ability to meet the personal and financial goals and responsibility, customer, supply chain, and ultimately on the social balance and the welfare of the people. Furthermore, these collapses also translate into losses for investors and can represent the loss of lifetime savings for the former or a retreat from the capital markets for the latter. The ultimate consequence, it has been a growing erosion of trust and confidence in the functioning of corporate markets and the whole economic system. Accounting and corporate reporting, as well as audit and assurance to which they are subject, these are the most essential pillars of the stakeholder community's trust and confidence in company. Ethics, corporate culture, and professionalism need to be high on the agenda for the development of fair, efficient, and competitive economic systems, solidly grounded in transparent and sustainable business models, as there is an urgent need to change the business model towards more ethical and professional behavior. So ensuring reliable, transparent, and high-quality corporate reporting, audited or assured according to ethics, independence, and quality criteria is one of the most relevant and effective way of restoring public trust and confidence in corporate reporting. So for this, International Ethics Standard Board of Accountants established a code of ethics for professional accountants, which are robust, comprehensive, and dynamic set of ethical standards, and which aims at a consistent alignment of values and approaches, and it helps to navigate ethical dilemmas. IESBA Code of Ethics, they sets up five fundamental principles of ethics. First is integrity, that is be honest and straightforward in all the professional and business relationships. Objectivity, that is don't allow bias or undue influence of others or conflict of interest. Professional competence and due care, that is apply appropriate knowledge of professional behavior, professional skills, and confidentiality. Confidentiality का मतलब आप लोगों ने मुझे बताना चाहिए. Secrecy. जो client information है वो disclose नहीं कर सकते. Yeah, exactly. That we can't disclose the client information because there are also personal details of clients which can't be disclosed in the financial statement. तो हम अपने जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो अपने को ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हमारी वजह से कोई जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की, the main business purpose should not be disclosed of the client अगर वो confidential है तो. और अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम एज ऑडिटर हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं, बाहर जाके हम अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि ये इस कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव है और आगे जाके उसके शेयर वगैरह भरने वाले हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते. इनसाइडर ट्रेनिंग हो जाएगी वो. इनसाइडर ट्रेनिंग नहीं ट्रेडिंग. So the accountants have to respect the confidentiality of information and professional behavior, that he has to comply with all the rules and regulations, and he should not perform any act that would discredit his profession. Now,
IESB is working in a variety of sectors where it thinks that the ethics or trust it may create or change the trust. Technology. So technology is changing the way the accountants work. While it creates some risk and opportunities, but it also poses some new challenges in applying the conceptual framework of IESBA to for example, artificial intelligence, it is posing a threat of independence for the auditor, and cloud-based storage of client data, that is जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर कॉन्सेप्ट आया था तो किसको लगा था कि मतलब आगे जाके हमारा जो करियर ऑप्शन है वो इसी से खत्म हो जाएगा? किसी को लगा था क्या ऐसा? तो आपको नहीं लगता है कि आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा स्कोप खत्म हो जाएगा? नहीं सर मैं एग्जांपल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पॉइंट प्लीज लिसनिंग हम भी सुन रहे हैं तो तभी आपसे ये पूछना है कि क्या करेंगे? Sustainability. Demand for timely, accurate, and relevant sustainability information has risen dramatically in recent years. So, to meet this, IESBA has developed an infrastructure that supports sustainability reporting and assurance with the high standards of ethical behavior and independence. IESB is committed to being part of rapidly progressing developments regarding sustainability reporting and assurance and providing timely response to ethics and independence related concerns. IESB has recently established a sustainability working group which is committed to develop a strategic vision to guide the IESB standard setting actions in relation to sustainability reporting and assurance and undertaking awareness raising activities for the sustainability reporting. Tax planning. Public attention has shifted on aggressive tax avoidance, which is linked to actual and ethical tax planning services. Tax avoidance का मतलब होता है tax को avoid करना using loopholes, और tax planning is tax को reduce करने की कोशिश करना with tax from tax benefits. So far as legitimate ways है, you can plan the tax, but you cannot plan the tax through any illegitimate ways. So it is giving a strong negative impact on reputation of professional accountants and in the trust of community of business. There is an increasing recognition of greater value in the notion of companies pursuing profitable solutions for the people. So IESB has been sensitive to these changes and working on a new ethics standard in tax planning to provide accountants with a strong baseline of ethical principles to perform tax planning services. Next is, can accountants be trusted with future accounting? So accounting emerge कैसे हुई थी? Basically, when the East India Company came to India, so there was a need to value their shares, trade their shares, and to do their accounting. And thus, the brightest of the minds at that point of time, they flew towards the East India Company to provide those professional services. So auditing emerged because accounting numbers were taken for the performance valuation. So to check the credibility of accounting numbers, auditing was emerged. The explosive power of credible information to facilitate the trade of products, services, and financial instruments and sustain large product is worth understanding. Nobel laureate George Akerlof demonstrated a very powerful idea using a simple model. He showed that when the seller of a product has superior information and the prospective buyer is aware of this information asymmetry, it can kill the market for the product.
if it is the buyer that is privately informed, then the outcome is similar. Information asymmetry. Information asymmetry we have studied in C economics. Can anyone explain? किसी को याद है क्या example जो हमने information asymmetry? We have studied the example of second-hand car. Yes, exactly. Incomplete. Yes, incomplete information. When the buyer has incomplete information, then the seller can manipulate the buyer, and only the second-hand car, the defective products will flood in the market. So, reducing information asymmetry can cause markets to explode, economies to boom, and bring prosperity to a large number of people. Now, there is a story of Alibaba's success in China, in which Alibaba was the first to recognize that buyers and sellers in China did not trust each other due to institutional and legal voids. Buyers were not assured that sellers would deliver good quality products as promised, and sellers that buyers would in fact pay them. तो अलीबाबा की स्टोरी ये थी कि ना तो बायर्स को ट्रस्ट था सेलर पे कि वो अच्छा प्रोडक्ट देगा और ना ही सेलर्स को ट्रस्ट था बायर पे कि वो अच्छा प्रोडक्ट मतलब अच्छे से नेगोशिएट कर लेगा. तो फिर ये जो मेजर जो प्रॉब्लम थी अलीबाबा ने रिकॉग्नाइज करी और उन्होंने एक बेसिस बनाया जिसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड हो सकती है. तो अलीबाबा acted as a facilitator between buyer and seller. So Alibaba does systematically introduce innovation in payments, seller rating, and certificate. Same story capital markets में आती है. तो आपके वो जो देखते हैं ना अपन रिव्यूज कई जगह आते हैं ना कि कौन से होटल का क्या रिव्यू है या प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, तो वो कई बार तो शायद ऐसा भी सुनने में आता है कि रिव्यूज भी पेड होते हैं, बट स्टिल जब भी अपन कोई प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन परचेज करते हैं तो दैट बेसिकली बिल्ड द ट्रस्ट. वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का ही प्रोसेस है. क्या एक रिव्यू अगर कोई प्रॉपर मिल रहा है तो देन यू कैन चूज दैट प्रोडक्ट और चूज दैट पर्टिकुलर सर्विस. सेम स्टोरी कैपिटल मार्केट्स की है. फॉर एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग में होता है व्हेन एक पब्लिक कंपनी के स्टॉक कोई भी बायर परचेज कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक and material information. So इस केस में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है कैपिटल मार्केट में, वो डिक्रीज होता है. So when the firms are audited by independent auditors and financial statements are periodically publicly released, so trade insider trading को हम reduce कर सकते हैं, provided that the financial statements are informative, and for them to be informative they shall be relevant and reliable. Relevant कैसे? Accountants and auditors have to be well trained, competent, and exercise their professional judgment. And reliability, it comes from the integrity, objectivity, independence of accountants and auditors enforced by the strict code of conduct. So professional accountants, they have to be as smart and diligent as the captains of the industry whose performance they were evaluating. अब auditors को challenge भी face कर रहे अपने profession में. For example, threats to independence, 5 threats पढ़े थे ना. Self-interest, credibility, accuracy, familiarity, and independence. सब एमपी करिए. Self-interest, advocacy, Familiarity. intimidation. So the critical ingredient that auditors bring to the table is their integrity. Auditors are in the business of trust. कभी-कभी वो biased हो जाते हैं because they are paid by their client. So their perceived and actual objectivity and independence, they are what auditors have to safeguard. कुछ measures है, for example, mandatory and voluntary audit partner rotation, जिससे long-term relationship build up now, and sometimes even audit firm rotation. Restrictions on auditors providing other services to their clients. Section 144 wali, and employees and partners of audit firms not having any relationship with their client, and independent audit committees hiring and setting audit fees are the ways through which the auditors can safeguard their independence. Now, the future of accounting rules
New technologies such as distributed ledger may make the authentication of transactions cheaper, faster, and more accurate, credible and independently verified information in the field of ESG reporting are immense as discussed. Now, Arushi will continue. Assurance in the digital age. तो अभी थोड़ी देर पहले CCH ऑडिट ऑटोमेशन की बात हो रही थी. हमारे ऑफिस में अभी रिसेंटली ऑडिट ऑटोमेशन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है. तो किसी को यहाँ पे आइडिया है उस ऑडिट ऑटोमेशन प्रोसेस का? प्लीज एक्सप्लेन. थोड़ा तेज उधर ऑनलाइन भी किसी को सुनाई नहीं दे रहा. इसमें से एप्लीकेशन में इस तरीके से कि आपका जो भी आप ऑडिट करोगे ऑलमोस्ट एवरी पार्ट कवर हो जाएगा. वो ऐसे बिगिन होता है, वो आपसे पहले पूछा किस टाइप की आप कंपनी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, और जैसे जैसे आप एंटिटी सेलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे उसके हिसाब से आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी. तो आपने जो भी अपनी ऑडिट ऑब्जर्वेशन या जो भी रिव्यू किया है उसमें भरते जाओ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अटैच कर दो. तो फ्यूचर में आप कभी भी उस जब कंप्लीट कर दोगे तो उस डॉक्यूमेंट को जब खोलोगे तो आपके हर एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन के साथ आपको पर्टिकुलर आपका डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, आपकी बैलेंस शीट भी मिल जाएगी और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थैंक यू वरन्या. तो इससे हमें पता चला कि बहुत सारा काम रिड्यूस हो गया. बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन जो हम बाद में जिसमें बहुत टाइम लगाते थे वो बहुत ज्यादा गैप कम हो गया. अब हमारे बीच में टाइम गैप कम हो गया. ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट करते करते साइड बाय साइड चलता रह रहा है और आपको उसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अभी पॉसिबल क्यों हो पाया? बिकॉज टेक्नोलॉजी है हमारे पास. तो अश्योरेंस इन द डिजिटल एज का मतलब आप सबको समझ में आ रहा होगा. एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. टेक्नोलॉजी हमारी ऑडिटिंग अकाउंटिंग प्रोफेशन को बदल रही है. सो IAASB कोई जानता है? IAASB क्या है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो हमारे SASB फॉर्मुलेट करते हैं. तो उनका एक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव आया है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सब अब जानने लगे हैं. तो IASB ने उसको इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया है. सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है IASB का, they are build process structures to support the IASB's disruption initiative. IASB चाहता है कि जो ऑडिटिंग और एश्योरेंस प्रोफेशन है वो टेक्नोलॉजी डिसरप्ट करे. उसके बाद मेंटेन एंड इंप्रूव द IASB's knowledge about the disruption trends and their implications for standard setting in the public interest, and share knowledge and agenda with stakeholders in the reporting community to improve audit and assurance quality and thereby improve reporting quality. तो ओवरऑल एम जो इस चीज का है वो ये है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव हो. सो मूविंग फॉरवर्ड द फ्यूचर ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस बहुत अलग होगा जब हमारा पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से डिसरप्ट कर देगी. बिकॉज कंटिन्यूस एंड रियल टाइम बेसिस पे ऑडिट एंड एश्योरेंस कंडक्ट हो रही होगी. हमारा जितना भी डेटा है वो सिस्टम्स पे होगा. ऑडिटर्स को सिस्टम्स का एक्सेस दिया जाएगा और वो रियल टाइम बेसिस पे ऑडिट कर पाएंगे. तो अब हमें ईयरली या हाफ ईयरली ऑडिट करने की जरूरत नहीं होगी. रियल टाइम बेसिस पे हर एंट्री हर ट्रांजैक्शन ऑडिट करा जा सकता है जिससे टाइम गैप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. एनालिटिक्स बेस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस फर्दर जो आगे सैटरडे क्लासेस होगी उसमें सेक्शन 3 डिस्कस होगा जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वो कैसे ऑडिट के प्रोफेशन को डिसरप्ट करेगी वो सब एक्सप्लेन करा जाएगा. देन रिमोट ऑडिट एंड एश्योरेंस टेक्नोलॉजी ने अब वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया है. कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है कि हम यहाँ हैं और वेयर हाउस बहुत दूर है. अब आपको उसको ऑडिट करने जाना है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, बट अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप जा सको. सो हाउ कैन यू डू इट? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, IoT सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, कैमरास, आप इनके थ्रू रिमोटली काम कर सकते हो. आप यहाँ बैठे हो और फॉर एग्जाम्पल आप जयपुर में हो और आपको कश्मीर में कहीं कोई वेयर हाउस है उसकी ऑडिट करनी है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है. तो इट विल बिकम इजी. अगर वहाँ पे IoT सेंसर्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, तो आप यहाँ से बैठे बैठे फिजिकली इन्वेंट्री को क्रॉस चेक कर सकते हो. देन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोफेशन. अब इतनी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो बाद में आप लोगों को हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इन सबको सीख सकें. Then these are the innovations happening across audit and assurance.
to access information and data, we will be using NLP, computer vision, for digitizing documents. हम documents को digitize करेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि हर चीज को हम upload करते जाएंगे audit automation software में, तो वो पूरा का पूरा documents अब हमें paper form में रखने की जरूरत नहीं होगी, वो सब digitized होंगे. Paper form में बाद में कभी ink खराब हो गई, कोई paper destroy हो गया, कुछ हो गया, but digital form में आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो आपके documents properly और safely maintained होंगे. वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को AI के थ्रू वेरीफाई कर पाएंगे, हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एंड देन हम इंटरनल कंट्रोल्स को भी टेक्नोलॉजी के थ्रू असेस कर पाएंगे. So the next topic is cyber security, zero trust, a virtue in the digital world. Can anyone please explain me what do you understand by zero trust? Zero trust से आप लोग क्या समझते हो? एक कॉमन पार्लेंस में, कोई टेक्नोलॉजिकल सेंस में नहीं पूछ रही, एक नॉर्मल वे में अगर मैं बोलूं मुझे इसको जीरो ट्रस्ट है, तो आप उससे क्या समझते हो? करेक्ट, मुझे हर्षित पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, अपन ये समझते हैं. बट इन टेक्नोलॉजिकल पार्लेंस डिजिटल ट्रस्ट का, जीरो ट्रस्ट का मतलब होता है कि मुझे उस पर इम्प्लिसिटली ट्रस्ट नहीं है, मुझे अंदर से उस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा. अगर मैं मतलब इनहेरेंटली मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे उसके लिए कुछ वेरीफाई करना है, मुझे उस क्रेडेंशियल्स लेने होंगे या कुछ वेरीफाई करके फिर मैं देखूंगी कि हाँ मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकती हूँ. तो जीरो ट्रस्ट इज नो इम्प्लिसिट ट्रस्ट. ओके, सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम सबको पता है टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी है. आज हम यहाँ बैठे हैं, घर पे मम्मी को खाना चाहिए तो हमने खाना भिजवा दिया उनको स्विगी, उबर, जोमैटो, इन सबके थ्रू. तो धीरे धीरे खुद बना के नहीं खिलाती है. तो सर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कैसे बनाऊंगी? नहीं, घर पे भी अगर होता ना तो अच्छा दिखा. आज आपके लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं. हाँ, वो भी कर सकती हूँ मैं, आलसी हूँ. तो क्लाउड, तो ऑडिट में क्या होगा? क्लाउड टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैटबॉट्स, IoT, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के. तो जैसे मैंने आपको जीरो ट्रस्ट समझाया, जीरो ट्रस्ट इज अ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रिक्वायरिंग ऑल यूजर्स. भले आप बाहर हो अंदर हो ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे भी आपको वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथराइज करेगा और कंटिन्यूअसली वैलिडेट करेगा. अच्छा, इसको थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन करने के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू यूज नेट बैंकिंग हियर? ऑल ऑफ यू डन. ओके, सो टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू लॉग इन इनटू अ नेट बैंकिंग? User ID and password. Okay. So what happens after 5 minutes of inactivity? Log out. They log you out. And what do you have to do to log in again? Right? So this is what zero trust is. They are continuously validating your identity that you are the person who is using the net banking, right? So this is what zero trust is, and the principles of zero trust architecture is continuous verification, like I explained. The limit and attack surface. अब वो ये चीज कर रहे हैं कि आपको 5 मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी के बाद वो लॉग आउट कर देंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई इंट्रूडर आपके लैपटॉप या पीसी में घुस के आपके नेट बैंकिंग को एक्सेस ना कर सके. देन ऑटोमेट कॉन्टेक्स्ट कलेक्शन एंड रिस्पॉन्स. अब बैंक क्या करते हैं, अब जब आपने ये सब किया तो वो देख रहे हैं कि आप कितने टाइम यूज कर रहे हो, कब यूज नहीं कर रहे. कभी नोटिस किया उसमें लास्ट लॉगिन लिखा हुआ आता है जब आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, तो वो डेटा भी कलेक्ट करते हैं कि आपने लास्ट कब लॉगिन किया था, किस टाइम लॉगिन किया था. आई थिंक मैंने भी ये पहली बार ही सुना है जीरो ट्रस्ट. सो इंडिया मैंने पढ़ी नहीं. और बट यस, आप जब भी ऑडिट कर रहे होते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आज की डेट में कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना. जैसे मान लीजिए कि जो ट्रायल बैलेंस है या जो भी आपके पास में डाटा आया है, यू हैव टू ऑलवेज वेरीफाई कि साहब अभी तक का जो हमने ऑडिट कर लिया वहां तक का ये है, कुछ और उल्टा सीधा इसके अंदर आ गया. हम हमेशा देखते हैं ना. तो दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ जीरो ट्रस्ट कि आपको एक बार वापस वेरीफाई करना है. तो ए कंटिन्यूअस ऑडिट प्रोसेस, व्हाट आई फील इज दैट इट इज ए कंटिन्यूअस ऑडिट प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर डिजिटल एज, जहाँ पे आप मतलब उसके ऊपर बेस्ड ऑन योर पास्ट वर्किंग भरोसा नहीं कर सकते, है ना. क्या पता ये चेंज हो गया. पहले ट्रस्ट कर लिया, बाद में चेंज हो गया. तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. तो वो आपको बार बार ये देखना पड़ेगा कि यार ये अभी आदमी ठीक है कि नहीं.
and look at Gartner's CARTA Adaptive Access Protection Architecture. CARTA का full form किसी को पता है? Continuous Assessment of Risk and Trust Architecture. Continuous risk. So, हाँ, बस अभी किसी ने जवाब दे दिया. So let's move forward. तो इसमें 4 आप लोगों को ब्लॉक्स दिख रहे हैं. First is discover requirements. आप पहले डिस्कवर करोगे रिक्वायरमेंट्स को, असेस करोगे कि क्या रिस्क है आपके सिस्टम में, राइट? उनके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है. उसके बाद फिर आप अडेप्ट करोगे, अडेप्टिव एक्सेस होगा और यहाँ जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट होता है. यहाँ पे आप लोगों को यूजर्स को राइट्स देते हो, उनको लॉगिन आईडी देते हो, उनको क्रेडेंशियल्स देते हो और डिटरमिन करते हो कि किसको कितना एक्सेस अलाउड है. उसके बाद वेरीफाई यूसेज, आप उनके यूसेज कंप्लायंस को मॉनिटर करते हो, आप एक्सेप्शंस को डिटेक्ट करते हो. एक्सेप्शंस यार सबको पता ही होगा क्या होते हैं. EIS में हम सबने एक्सेप्शंस पढ़े थे. कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? हाँ, ऑलमोस्ट करेक्ट. सो एक्सेप्शंस जो है तो हम एक्सेप्शंस करते हैं, रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं. जो ज्यादा रिस्की है उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट करेंगे, उसके बाद जो लेस रिस्की है उसको धीरे धीरे करेंगे एंड देन हम उस रिस्क को मिटिगेट करेंगे एंड मूविंग फॉरवर्ड वी विल मैनेज द यूसेज. फिर हम वापस वही जो डिजाइन, इंप्लीमेंट और एनालाइज वाले स्टेज होता है, हम वापस उस पे आ जाते हैं और हम अब सब चीजें असेस करेंगे कि हमने एक बार फिर से रिस्क असेस करेंगे कि अब कोई नई रिस्क तो नहीं आ गई है. फिर एनालाइज करेंगे जो भी यूसेज हो रही है और इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक्सेप्शंस को रिस्पॉन्ड करेंगे. सो अब आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड एशिया इज नाउ द मोस्ट टारगेटेड रीजन फॉर साइबर अटैक्स. और डेटा ब्रीच की जो एक एवरेज टोटल कॉस्ट है इंडिया में वो करंटली 2022 में 17.6 करोड़ है. फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स है वो सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं. डज एनीवन हियर नो कि अभी रिसेंट में डेटा ब्रीच हुआ और बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़े स्केल का डेटा ब्रीच. वेरी गुड, नाइस. एम्स का भी डेटा ब्रीच हुआ है और इस वजह से आपने आंसर किया राइट. तो आप थोड़ा बता सकते हो उसमें क्या हुआ? हाँ, वो काम अभी भी रुका हुआ है और वो मैन्युअली हो रहा है. अब वो सिस्टम्स के थ्रू नहीं कर रहे बिकॉज रैंसम अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ी है एंड दे आर नॉट रेडी टू गिव इट. ओके, नाउ सो we should be future ready, we should be smart, and till then we should trust but before verify. Okay, before verify. Trust after verify. I'm really very sorry. Harshit, don't understand. Thank you everyone, this was all. So we will start with the quiz. I think almost everyone who has attended online is still there and please do not leave because I will be asking a few of you about your feedback on today's class. Of course, we could not interact much because of various technical challenges. But I still see that those who have actually appeared in final examinations are also there. So Nikhil Saraf. Yes, Nikhil. Nikhil, are you there? Pratiksha Jain. एक बार वो निखिल नोट कर हेलो निखिल सराफ, प्रतीक्षा जैन.